everyone, this is Darshita Singh and today we are going to learn chapter 1 of class 6, The Wonderful World of Science. And in this chapter we are going to learn the word curiosity. Curiosity is an innate, inborn need to know our surrounding. Now let's look upon what science is. So science, according to NCERT, has two pillars: new knowledge and re-evaluation. New knowledge refers to the new discoveries that take place, which constitutes science, and re-evaluation is basically re-evaluating the previous discoveries on the basis of new discoveries. For example, let's say the previous discovery was that कि अर्थ जो है वो flat है, and the new discovery is that earth is spherical in shape. Now the new discovery changed the previous assumption. उसको करेक्ट कर दिया, उसको रीइवैल्यूएट कर दिया प्रीवियस assumption को. तो दिस इज़ व्हाट साइंस इज. नाउ लेट्स लुक कि साइंस का एक बहुत बढ़िया नेचर होता है कि वो हर जगह प्रेजेंट है. साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू एन एंटायर फॉरेस्ट, from depths of the ocean to far reaches of space. Science is everywhere. Science is in natural phenomena where we ask questions like stars कैसे चमकते हैं, flowers कैसे bloom करते हैं. In life processes on earth we often ask questions कि plant कैसे grow करते हैं, caterpillars butterfly में कैसे convert हो जाते हैं, and materials like what are paper, metal, plastic, rubber, किससे बने हुए हैं ये सब चीज़ें, और how are different materials be separated from. साइंस इस चीज़ में भी है कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे बदलता है, आइस से वाटर कैसे बना, वाटर से आइस कैसे बन गया. हम टेम्परेचर और हीट के बारे में भी साइंस से ही समझते हैं. एंड द साइंस इज़ ऑल्सो बियॉन्ड द अर्थ. वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट सन, मून एंड स्टार्स. तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है दैट साइंस इज एवरीवेयर. सो what we have learned till now, we have learned a new word called curiosity, which is also the name of your new NCERT. We've also learned what is science. Science it refers to new discoveries and re-evaluation of the previous discoveries. And then we learned everywhere, science is everywhere, from the single leaf to an entire forest. So this is what we have learned till now. Let's move to the next topic, the scientific method. So science is a systematic process of finding answers. What does this systematic process means? There are a lot of steps, or we should say scientific method to perform. Then only we'll be able to say that yes, a scientific method is used. Okay, now let's see what the scientific method says. Pehla, observation and questioning. So if we notice something interesting or something which cannot be explained in words, we question this. So what we did, we observe things and then we question it. The first is questioning and observing. The second steps of scientific method is hypothesis. Hypothesis is basically making a possible answer to the question. Making a possible answer to the question is hypothesis. You're making a hypothesis. Don't worry, we'll be doing it with examples so it would be easier for you to understand. Then we test our hypothesis. जो भी hypothesis we have created, we'll be testing it through experiments. Then we'll analyze the results. जो भी results आए उसको analyze करेंगे, and this question that we asked पहले in the first step, वो question को फिर से हम यहाँ पर लेके आएंगे and हम पता करेंगे कि this question has been answered by our experiment or not. So what we did, we observe and question, then we made an hypothesis, then we tested through experiment and then we analyze it. For example, एक पेन है, तुम लिख रहे हो, वो चलना बंद हो गया. So what you will first, observation and questioning में what you will write,
फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो यू विल राइट दैट इन ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग देयर इज दिस थिंग कि पेन जो है इट इज़ नॉट वर्किंग एंड वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ऐसे करके तुम लिखोगे. हाइपोथेसिस में व्हाट वुड बी द आंसर कि हाइपोथेसिस में क्यों नहीं चल रहा है पेन, क्योंकि रिफिल लेट्स से ख़त्म हो गई है और लेट्स से पेन जो है वो टूट गया है. थर्ड, टेस्टिंग में बेसिकली यू विल ट्राई एन अनदर रिफिल और एक दूसरा पेन की निब लेके आओगे एंड उससे ट्राई करोगे लिखना. सो दिस इज़ बेसिकली यूर एक्सपेरिमेंटिंग विद योर पेन. एंड देन यू विल एनालाइज कि जो क्वेश्चन था पहले कि पेन क्यों नहीं चल रहा है, नई रिफिल डालने के बाद चलने लग गया, तो अब तुमको समझ आ गया कि रिफिल ख़त्म थी. नाउ दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड एंड एज आई टोल्ड यू साइंस इज़ एवरीवेयर. तो पेन का एग्जाम्पल यू कैन डेफिनेटली राइट, कोई मना नहीं करेगा. नाउ लेट्स लर्न साइंटिस्ट अमंग अस. सो anyone who actually follows a scientific method is a scientist. For example, there's a cook. Cook often wonders why food spilled from a cooker. Why? Because there is too much water. They're questioning it and they're making an analysis, an assumption, hypothesis, testing it, and again they're analyzing it. Cook भी scientific method use करता है, रिपेयर पर्सन भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, इलेक्ट्रिशियन भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर इन पीपल यूज साइंटिफिक मेथड्स इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हम अननोइंगली साइंटिफिक इंक्वायरी में एंगेज हो जाते हैं. ठीक है, और साइंस लर्न करने से वी गेट एनहांस्ड, आवर क्वेश्चनिंग एबिलिटी, आवर solution finding ability get enhanced. Now let's learn the last topic of this chapter, cultivating curiosity. So if you truly want to learn science, then this word is very important for you. You have to keep asking questions on how and why this particular thing is happening. If we also look at the scientist, then scientists also work in teams and answer these questions, how and why. A very important quote is written over here, which is I think my favorite quote for this whole life, that to be a wise person you must be a wise person. I hope you understood the meaning of this quote. If not, I'll be telling you in the next session maybe. And hence this is our last slide. We are completed with the chapter. Let's do a recap. We did scientific method. Scientific method. We did the curiosity part, the last slide, of asking question on how and why. And we did scientist among us. Everybody who is engaged in scientific experiments, scientific method, are actually engaged in scientific inquiry. And that's it. And we are done with the chapter. Thank you so much. Bye-bye.